So first question मैं जानना चाहूंगी mechanism of Kumbhaka. Mechanism of Kumbhak. How does it affect the internal organs and how does it works? So the first thing, mechanism of Kumbhak is what you can also call as mechanism of life. What does life mean? You might describe life in so many different ways. But fundamentally, life means a possibility of action. Right? Right. So if somebody is not able to act, do you think that person is alive? No, the person is not alive. So the mechanism of life is fundamentally the mechanism of dynamics, the dynamic mechanism of life. The dynamism of life is only what you call as life. So how this dynamic aspect of life gets promulgated, और ये कैसे किया जाता? It is done through Kumbhak. Kumbhak से ही dynamism होता है. Dynamism is not possible without Kumbhak. So for example, I can give you many instances because see, what we do in terms of research is just bullshit at this point. अगर real research करना है तो we should do research in these areas. Now, do you know monsoon season is arriving, right? And how do monsoon or the clouds come to this area, the upper region of India? When there will be a low pressure zone, or what you call as, in simple terms, a vacuum. If a vacuum gets created somewhere, the air from different region comes there to fill it up. यही होता है. Right. So there is an emptiness which is needed for any action. Okay. Right? Without emptiness, dynamism is not possible. So the emptiness, the zone of emptiness varies. So the zone, or what you call as emptiness or hold, you can also call it as hold, no movement. When you say emptiness, what does it mean? There is no dynamism there, no movement. Right? So this no movement creates movement. So this hold creates movement. This no movement, we always call it as Shiva. The complete hold, the absolute hold is always called as Shiva. 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 Yeah. Shiva, yes. Lord Shiva. Lord Shiva. वो लॉर्ड तो आपके अंग्रेजों ने लगाया ना, हम लोग तो शिवा बोल. ठीक है. तो शिव तत्व is the core of dynamic life. What you call as life, the fundamental on which this life has been built is Shiva Tattva. Right? If you call life as a dynamic aspect, Shiva Tattva is absolute stillness. So when we do Kumbhak, what do? We hold. So breath hold is also called as Kumbhak. So I have given you life hold is also called as Kumbhak, and that Kumbhak is Shiva Tattva. Right? So breath hold is also called as Kumbhak. Stagnancy is also called as Kumbhak. Focus is also, if you are absolutely focused, you are still. Stillness is Kumbhak. Right? Stillness is Kumbhak. Stillness is meditation. Correct. Right? Now, even to go towards Shiva Tattva, you have to be still, or you have to hold your life in a particular manner. Right? That is a spiritual aspect of it. But even to do a dynamic activity, there has to be hold somewhere.
Without hold, action cannot happen. So wherever there is an action, there is a hold which is actually conducting the action. So when you move your hand, you are holding your hand somewhere, and that is why you are able to move your hand. Correct. Right? So for the movement of hand, you are doing Kumbhak. Without Kumbhak, you can't move your hand. You are holding yourself somewhere. That is why you are able to use this body to do some dynamic activity. So without Kumbhak, you can't use your body. Now, if your organ is performing some dynamic function, there has to be a Kumbhak behind. Without Kumbhak, no organ can function a dynamic activity. If you understand what kind of Kumbhak can perform what kind of activity, then you can understand the mechanism of life. I am talking about dynamic life. There is something called a spiritual aspect of life also. I am not going in that direction. So dynamic aspect of life. Without Kumbhak, no dynamic activity can happen. Right? So Kumbhak and some action, or you can say type of action, is correlated. Different Kumbhak for different type of action. What we are doing here is decoding that. What kind of Kumbhak performs what kind of dynamic action. Right? There are a lot of work to be done in this area. Absolutely. I have just started the fire. In my lifetime, I'll not be able to explore uh, Yeah. the whole dimension of Kumbhak. It's so vast. It's so vast. But I am trying to ignite the fire. और अगर इस Trying to आग follow से the facts. हाँ अगर इस आग से जंगल में आग लग जाती है तो nothing better than that. Now, to give you a little example, the hold the fundamental hold is very difficult to actually understand or touch upon. But any activity, the Kumbhak which is just behind that activity can be decoded. The fundamental activity is very difficult to decode. And the most fundamental is absolutely impossible. Shiva is impossible to decode. You can't decode Shiva. You can experience Shiva. You can experience, but you will get annihilated. You will die. Right? There is no possibility to decode Shiva. But on the way, there are many, what you can say, milestones. You can decode those milestones. So, for example, liver activity happens, and I say this: if you inhale for 1 unit, hold for one unit, exhale for 4 units, this will impact the liver dynamic function. So, the moment we impact the dynamic function of liver, we are supporting it, isn't it? हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना एक्शन करने में. जब हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं एक्शन करने में, तो it will get help in terms of its activity will increase. हम उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. तो ये जो आपने जो ये काउंट दिया, ये जस्ट फॉर लिवर के लिए? ये केवल लिवर के लिए नहीं, लिवर के लिए नहीं, जस्ट फॉर लिवर के लिए नहीं. सो ना यही चीज जो है ना, ये if you try to decode everything through logic, this is the catch. Logic बहुत ज्यादा versatile नहीं होता. Logic का मतलब है you want to concretize everything. Logic का मतलब होता है आप हाथ को अलग कहते हो, पांव को अलग कहते हो, मगर आपके बगैर ये हाथ पांव काम नहीं करता. So the moment you start logic in trying to decode life, you will fail. Inevitably fail. This is what is happening with modern medical science. They are failing in every step. ठीक है ना? तो जब मैं बोलता हूं, although see the intention is not wrong.
वो भी जानना ही चाहते हैं, मगर उनके पास में वो बेसिक्स नहीं। थोड़ा चुराया हमसे, जाके फिर डिकोड कर, उनका, उन्होंने उस पर काम अच्छा किया, बट अगेन वो हमसे अगर चुराना था ना, तो वो तो चुरा नहीं पाए ना जो दिखता नहीं है, वही चुराया ना जो दिखता है। प्रॉब्लम यही था कि वो लॉजिक से ही डिकोड करने की कोशिश कर। तो लिवर फंक्शन, व्हेन यू से लिवर फंक्शन, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज कोष्ठाग्नि। किसी चीज को कोष्ठ में यानी अपने शरीर में बदलना। तो इन सिंपल टर्म्स, आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपके सेल्स में बदलने का पहला काम लिवर कर रहा है। बट कॉम्प्लेक्स, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूं। एक नॉन लिविंग चीज को आप लिविंग बना रहे हैं। इज इट सिंपल? कैन यू डू इट? कैन एनीबडी डू इट? बट योर लिवर इज डूइंग, योर लिवर इज डूइंग इट। सो एक एस्पेक्ट इसका, हम जब कहते हैं लिवर, मगर इसका दूसरा एस्पेक्ट एक और है, इसे हम कहते हैं समर्पण। व्हेन दिस इज, आई एम गिविंग यू अ रेशियो, दिस इज अ रेशियो ऑफ समर्पण। भारत में ये टॉप प्रायोरिटी पे है। इफ यू अंडरस्टैंड समर्पण, यू अंडरस्टैंड इंडिया। इफ यू अंडरस्टैंड भक्ति, यू अंडरस्टैंड इंडिया। भक्त वो होता है जो कि एक ईश्वर को भी अपने पास आने के लिए मजबूर कर देता। तो समर्पण इतना कि पूरी लाइफ का पूरा प्रक्रम मजबूर हो गया आपके सामने। अगर ईश्वर मजबूर हो जाए तभी तो वो आपके पास आएगा। तो किसी निर्जीव चीज में भी जान फूंक, ये एस्पेक्ट है ये रेशो। सो देयर इज अ सिंपल एस्पेक्ट जो मैंने बताया, विच इज एक्चुअली रिडिकुलस टू से, कि इससे लिवर आपका अच्छा होगा। लेकिन क्या करें, क्या करें, सामने वाले की बुद्धि इतनी है, है ना। तो खोल के तो नहीं बता सकते सब कुछ, और खोल के बताएंगे भी तो भी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। राइट, समझने को लॉजिक से ही समझेंगे फिर भी। राइट, हाँ। तो दिस इज हाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हर डायनामिज्म के पहले पीछे एक कुंभक होता, हम उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस लाइफ फंक्शंस। बॉडी के टर्म्स में, केवल बॉडी के टर्म्स में ही नहीं, पूरा नेचर में विदाउट कुंभक नथिंग हैपेंस। अभी बताया बारिश भी जो होती है वो कुंभक से ही होती है, राइट, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कुंभक। कोई भी डायनामिक एक्टिविटी होती है उसके पीछे एक होल्ड होता है, तभी वो एक्टिविटी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी।